कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। युवधारा. Varun, what you can do is, if there is any senior citizen who doesn't know how to put it on, तो चिके वत्सन help करे. There's no point in glaring. What's or some more alert person तुम पढ़े. आम्ही सांगा ना पण immediately करू का, unless special permission जाय. कोणा काही off ते silent करू या ना जरी वरून माम ते कोण सोडतला. जात नाही थोडे लोकांक या ना receive करू क्या था disconnect. Attend to these things. They can be done very inconspicuously also, and that is also a very, very necessary thing. It's been a learning experience. Why can I? For you all also, it's been a great learning experience for me. कितली गंमत जालें इंटरॅक्शना वेळा सणकळ्ळें शिकतास का स्टेज चेडवांगेल नाटक चलतास ऑडियन्स बसल्या ती आमकां थंय खुर्ची आम पळयता आसा ती पाप करता आसा तें सांगना तें मायकची केच हांग जालें थंय जालें तांकां कळना. प्रार्थना वर्ग टिचर्स पयलीं कशें करतालीं अनऑब्ट्रुसिवली केलकी म्हूण हगूर एक पाची थंय थंय आनी हॉट स्टेज आसल्यार थंय थंय सूर जाता आशिल्ली क्रॉल हगूर आनी हांग्याना फळ हगूर करून. Those 1.5 minutes everybody is only paying attention to that. If she had just walked up, adjust कोण वचली कोण आयल मध्येन म्हूण सुद्दां कळच नाशिल्लें. वय न्ही. So you have to learn. पळयता सती. Why do we make the same mistakes? We can learn. So attend to this. कोणाक हेल्प जावं का तुमी कशें उद्दाक खांगता आसत न्हू उद्दाक मे बी गोतना जावं ना तातूंत तुमगेल सेल्फ कॉन्शियसनेस न्ही तें एक संकोच म्हणटा तो वतलो सहजता येवंका शिव सायुज्यम म्हणटा आसत आमी. सायुज्यम म्हळ्यार एक आमगेल प्रयत्न आसता तातूंत प्रयत्न करता आसती ऐक्य जावंका ह्या जल्मान तुमची सायुज्य मुक्ती जावंका. शिव सायुज्यम म्हळ्यार यू आर डिफायनींग शिवतत्व निर्गुण निराकार अत्यंत शांत आशिल्लें हे सृश्टीचे परे जावन आशिल्लें. हे शांत शब्द आय डिजुएडेड दी युवधारा मेंबर्स. प्लीज डोंट तुमी शांत जाल्या म्हणनाका ती थंड बैसात आय मे टेल यू बट शांत म्हणनाका ती पॉयज जावंका एलर्ट जावंका. शांत म्हाका खंय वचून गाडी म्हूण कळना. I want poise and alertness. So, तशी जाल्यार ते येवंका म्हळ्यार you have to feel that, experience that peace within, so the best comes out. This is an experiment. So, आमी एक व्यवस्था केल्या हांगा आमकां laboratory experiment. Leave your domestic कलस्ता किरकिऱ्यो थंय सोडा ती संस्कार मात्र घेवन येता ती वील डील विथ देम. प्रोफेशनल कशी रायवलरी आसता हें आसता तें आसता वय की ना. मिटींग चलता आमी सांगता ती यू आर एक्सप्रेसींग समथींग समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन चूक जाल्ली आपणाली उलयतना ओ आय एम व्हेरी सॉरी म्हळ्यार घोटाळ जाता. यू हॅव टू गो अरावंड इट एज दो इट वॉज नो मिस्टेक. इट्स डेफिनेटली नॉट युअर्स. Otherwise, you problem sounds. That's also a skill.
हंग तें करू वचूनच हंग टोटली डिफरंट एक एटीट्यूडच आसता. आय वॉन्ट टू ग्रो सो दॅट आय कॅन पार्टिसिपेट मोर इंटेलिजंटली म्हणून एंड वी इन्सिस्ट ऑन दॅट. सो इंटरॅक्शन लास्ट कल जाता दॅट इज व्हेरी रिव्हिलिंग. रिव्हिलिंग म्हळ्यार कोणे निप्पोनच्या पळयलें इट बिकम्स मोर रिव्हिलिंग. आनी एक्सप्रेस करूं पळयतस डिस्कवरींग उलयत उलयत थंय आपणाली चूक हाव डीड आय कॉन्ट्रिब्यूट टुवर्ड्स अ मिस्टेक दॅट हॅपन्ड ऑर समथींग म्हणून तें इंट्रोस्पेक्शनाक मनांत न्ही विमर्श जाता, इंटरॅक्शनान तांतू जाता. इतलें एक सहज जाता आमी पळयलें काली मस्त खुशी जाली. सो आमी हांकां निश्चित एक प्रसन्नता जाल्ल्या आमी म्हण येता. आध्यात्मिक कार्यक्रम कल हांगा चलता आसती तांतू सगळ्यांगेलें पार्टिसिपेशन ही मुखावेल पिढी आतां तयार जावन प्रस्तूत करतस तांतूय मस्त आनंद म्हाका आयलो. हय हें नोव्हेंबरांत तूं शिबीर आशिल्लें तें थंय इलेक्शन कोड आनी सूर जाल्ले निमित्त आमकां करूं जायना. उत्तर भारतची यात्रा करतना तुमी पळयात ती आमी सांगल्या. आदित्य यू द रिप्रेझेंटेटिव्ह. सो आदित्य चंदावरकर मामाक यू हॅव अ क्विक कलर्स द ओपिनियन ऑन योर WhatsApp. If they are willing, Praveen ma'am, I was thinking before the yatra or subsequent यात्तना विचार करून माउंट आबू वचून थंय एकदां शिबीर करून येवया. बिफोर विल बी इवन बेटर. एंड दिस नोव्हेंबर इज ल्यूक वॉर्म. जानेवारीन समज थंडी आसता वेल्यार हांकां त्या वेळार व्हरची इच्छा आसा आमकां तशी एक पळया तुमी विचार करून सांगा ती मागीर आमी थंय नारायणगिरीजींक निमगून करया. तर टिबेटियन ते एकदा हेंच न्ही तशी आयकत न्ही. इट डजंट डिस्टर्ब. इट्स व्हेरी नायस. कल सांगश तुमकां कळ्ळें मैथिली सांग. अभी जो आपने उद्गार व्यक्त किए गुरु चरणों में इत्यादि, फिर आपका परिवार भी यहाँ पे आया, शिराली तक आए, अन्य लोगों को भी आप लेके आए. इंसिडेंटली इन दैट एरिया आगरा, मथुरा आणि he stays in Ghaziabad. आमगेल जाल्यारी ही इज़ बिन इलेक्टेड एज दी एक क्या आपकी उपाधि दी गई है आपको? प्रतिनिधि नहीं, अध्यक्ष वहाँ के ब्राह्मण समाज के, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ उत्तर प्रदेश सारस्वत ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं. सो ही फील्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट समाज ऑल्सो. सो सुमार लोकांक घेऊन येईल आप लाए थे. तो उस समय समाज के सदस्यों को समाज के सदस्यों से मिलने का एक अवकाश प्राप्त हुआ. फिर आपने कहा था कई लोग हैं जो शिराली नहीं आ पाए शायद, तो उनके लिए यदि बाबा जी वहीं पर आए तो अच्छा है. तो भी यात्रा की बात हो रही है. निगल कलना वैभवी गुरु चरण रज घेऊन चलेली भाई. बट फर्स्ट शी वांटेड हम क्यों नहीं गुरु चरण लेके जाएं. शी डजंट नो, शी इज़ अ चाइल्ड. आई एम very attached to my charanas. My charana, I am also come. He knows what it means. Taking care of this. So you can make it an occasional exercise. Otherwise, that sentiment is very important. Very important. So child वांगसुद्धा ही भावना येता संस्कार असल्यारी जाल्यारी एक संस्कार प्रस्फुटीत जावच्याक एक स्थान जाय. शिराली आयली, कारला आयली, ताव वळता जाल्लें कनेक्ट बसलें. नाजाल्यार आनी खंय कार्यक्रम केल्लेले असल्यारी हॉलांत तूं आनी बरेंच इंटरॅक्शन जालें. बट तें एक स्थानाचें
कॉन्टैक्ट म्हणता ती एक लिंक एंकरिंग जाता है, इट वुड नॉट हैव हैपेंड. वही महिमा है इन मठों की, इन स्थानों की. सही बात ना. बढ़िया से बढ़िया हॉल में भी ऐसे कार्यक्रम यदि आयोजित किए जाएं, बच्चों को संस्कार मिलेंगे, पर हॉल से वो संबंध तो नहीं बन सकता. शिराली आए तब जाके हाँ ये मठ है, तो इस प्रकार सा एक संबंध बनता है, अनिवार्य है. तब वहाँ के जो जागृत हुई शक्तियाँ हैं, देवता हैं, दैव हैं, वो भी प्रसन्न होने लगते हैं, वो भी अनुग्रह करते हैं और तैयार करते हैं उस साधक को, साधिका को. अब यहाँ पे इस बार आपने सुना, देखा, ही रेकग्नाइज्ड युवधारा कितलं ॲक्टिव्ह जाऊन करतं असं. धंधा शुरू किया, फिर जाके लड़के को सौंपने का समय आया तो थोड़ा सा कुछ होता होगा ना. हाँ, तो उसको हम मिनिमाइज करने का प्रयत्न करते हैं. हा जरी तुम्ही विमर्श करता पडतलो. I told you, I learned a lot. So, आता आमगेले senior volunteers आसा ती who have done so much, trained these youngsters also, and the youngsters have, Yuvadhara members have taken key positions, responsible. पूजेच कोण सांभाळता, accommodation आज कोण सांभाळता. So, the Yuvadhara members have accepted this responsibility for this Navaratram. So तांकां कशी गाईड करचें, कितल मोटाक इत्यादी, तीं कशें they are learning, releasing, moving back, so that you can participate more fully as a volunteer in all activities without being burdened or restricted to one particular activity. ही वे कला जिके फाइन ट्यूनिंग तुम्ही कर कापडतले senior volunteers आनी. So it's a learning process for everybody. Hardly any teaching that happens. Learn, 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 learn. Antarlakshyam bahirdrishti. It'll pura. Nimeshonmesh varjita mate ek samadhi चे शांभवी मुद्रेचे लक्षण. बट साधकाक सुद्धा दृष्टी भायर असता, सगळ्याचेर दृष्टी असता, पळयतच का, जर लक्ष्य भितर असता. लक्ष्य आत्मबलाने कार्य करतस की चिक्के एक मुखार येऊन अहंकारान कार्य करतस की इत्यादी हैं. एक कॉन्स्टंट एक कल म्हणता ती vigilance has to be maintained. When you're learning something new, definitely. When you're handing over something, it is very, very subtle. So तांतू एकूय परिष्कार आमी सगळ्यांनी हाडका पडटलो. ही सगळी युवधारा कळ्ळें, बच्चूज आसा ती आमी चॉकलेटां दितालीं. They are young adults, married, parents also, some of them. Don't refer to them as bachus. It doesn't come out well. You don't come out very well in that. Something कहीं खटक रही है क्या बात? Why are you calling them bachus म्हण जाता? They don't want to be called bachus. They have maintained their dignity. Maintain yours. Youngsters is okay. Kids म्हण आसता, I don't like that. Children म्हण एक dignity है त्या चेडणा. Kids म्हण केलें तूं भास्या ना हांवें. Bachus is very high. So काही की चिर जातास, relax. Fantastic जातास काम. Let it happen. It's a projection of your own self म्हणल्यार का ती. चेडवांगेल कशी तुम्ही पळयता ती तशीची जाता आसा. Starting with this आनी कसलें सुदार हाडचें आसा विचार करुयात मागीर. 8 साल के बच्चे को आश्रम में भेजा जाता, गुरुकुल में भेजा जाता था, उपनयन होता उसका और फिर बस उस आश्रम में गुरु की सेवा में रहता, अध्ययन होता, खूब अध्ययन, वेदाध्ययन, सेवा करनी पड़ती. तैयार हो गया तो फिर आचार्य जो हैं देखते हैं हाँ ठीक है, अब इसको वापस समाज में भेजना है. समाज के गांव के कुछ थोड़ी दूरी पे आश्रम वगैरह हुआ करते थे. भयंकर अरण्य में नहीं, रण एक इस प्रकार से, पर प्रशांत वातावरण में, लैब कंडीशंस म्हणता ती. देन द चाइल्ड वुड बी, द बॉय, द यंग
विद्यार्थी आता कल ग्रॅज्युएट म्हणतात, he would be sent back. उस समय तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का के जो मंत्र हैं उसका थोड़ा सा कई बार कर चुके हैं, पर आज फिर से करूँगा। वेदम अनुच्चाचार्योन्ते वासिन मनुषास्ति सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः इत्यादि। वेदम अनुच्चार्य, वेदों का उच्चारण करके, उच्चारण करवा के, यानी वेद पाठ सिखा के, आचार्य क्या कहते हैं, ये जो अंतेवासी हैं, नॉट स्टूडेंट्स, वहाँ पे रह के सेवा करके शिष्य बन के विद्या जिन्होंने प्राप्त की है, हृदयंगम हुई है वो विद्या, नॉट जस्ट बाय रोट जिसको कहते हैं, ऐसे अभी युवक को आचार्य जो उपदेश देते हैं, अनुशास्ति एक अनुशासन देते हैं, सत्यम वद धर्मंचर, आई वोंट गो इनटू द डिटेल, नो एक्सप्लेनेशन, स्वाध्यायान मा प्रमदः, जो सीखे हो उसका अनुसंधान करते रहना, उसका पाठ करते रहना, कहीं भूल न जाए इत्यादि। आचार्याय प्रियं धनम मा आहृत्य, दक्षिणा वगैरह देनी है, संतुष्ट करना। प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी, यानी अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, प्रजातंतु है, पिता पुत्र परंपरा है, उसका छिद्र नहीं करना, आगे बढ़ाना, ऐसा आशीर्वाद देके भेजा जाता था। सत्यान्न प्रमदितव्यम, हाँ ठीक है, फिर सोचूंगा सत्य की बात, प्रमाद नहीं करना। धर्मान्न प्रमदितव्यम, इस स्तर पे कल है ग्रेजुएट, ऐसे व्यक्ति को वस्तुतः यह उपदेश दिया जाता है जो सभी जानते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बच्चे को नहीं सुनाते, मातृदेवो भव याद रखना, पहली माँ जो है वो पहली गुरु थी, फर्स्ट गुरु। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, बहुत प्रेम मिला, प्रेम मिलने से मैं प्रेम का योग्य हूँ, ऐसा आश्वासन केवल माँ ही दे सकती है, तो उसको कभी भूलना नहीं। इस प्रकार से एक उपदेश पिता ने सभ्य किया है, सभा में ले जाने का योग्य बनाया है, कैसे बैठना, क्या कब बोलना इत्यादि सब सिखाया है। आचार्य देवो भव, आचार्य ही जिसके लिए देव है, ऐसे बनना, जो विद्या है उसको सुरक्षित रखना, योग्य व्यक्ति योग्यता को पहचान के फिर उसका प्रसार करना, देना इत्यादि। और फिर क्या आता है, अतिथि देवो भव। वस्तुतः आम्ही असे एक वातावरणात याना पुढे वी हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट थ्री, एंड अतिथि देवो भव ये मार्मिक होने लगता है। अपना घर है, कमाया, मैं मेरे संतुष्ट रहें, अतिथि अतिथि बिना बताए कोई आए, जिम्मेदारी, हाँ परिचित हैं, आए आओ वेलकम, उनका स्वागत करके हॉस्पिटैलिटी में, या मोर देन दैट, नाका ओनली दिस मच है म्हणता ती भावनवाचा, लेट योर हार्ट एक्सपैंड। अतिथि देवो भव का अर्थ है कमाओ, आगे बताया गया खूब कमाओ, पर उद्देश्य क्या है, उसका सदुपयोग हो इस दृष्टि से, फिर वो स्वार्थ में एक घुटन सी न हो, इसीलिए अतिथि देवो भव। Planned is the unplanned also, the unexpected also, have the courage to deal with it very intelligently. It can be at a very subtle level, it can be a sudden guest who comes, you have to take, or you somebody is requesting you to help and you can very easily give. Learn to give. Atithi devo bhava, unexpected, not planned, not according to your idea of this is my life, this is how I should move ahead. Somebody else demands. You may be in a position to give a little bit of a sacrifice. Dimcha shikkati. So that is what we are learning here.
You have definitely come here for your individual improvement. There's no doubt about it. So you should be able to sit, you should enjoy slowly deeper levels of meditation, you should be able to participate in the part and not get tired out of within 15 minutes and all that. Any corrections yatta stati, hankornaka, tankornaka ityadi. But participatory kal jata, when you accept responsibility and you start working, really that Atithi Devo Bhava Bhavana begins to blossom. In each sadhaka here, you are not the host here. You are as much as a guest as anybody else, and still I am insisting that Atithi Devo Bhava Bhavana has to blossom here. And that is why all this seva, etc. अर्थ जाता असा थंय पळय आदी कितले परिश्कार येता उच्च कोटी एक अल्टिमेट स्तरारी स्वाम्यांक गेले आशिल्ले निमगेल्या दिवन सणटांनी कितली प्रसंगां आयकल्या ती स्वामी शिराली आसतना बशिल्ले कोण की आयलो एक मनुष्य मस्त त्रास दिला आनी भारी एक अभिमानाने लोकांक सांगलें अशें आपण अशी केल्या स्वाम्यांक मागीर हगूर हगूर भय्य बयसो सूर जायना पळय समोवाची गुरू शाप लागून की येवन म्हाका ती माळ जाय म्हळ्यार दिवन सडली आनंद आश्रम स्वाम्यांक गेला आसन आशिल्लें स्वामी वापरतालीं धामाक जाय म्हळ्यार दिवन सडलें लागीं अशें लोकांक कसल्याक ताका आश आसा घेवन तितलो स्तरार आमकां सहजतया करूं जायना आनी कोरना जाय पण तितलो विशालता येनी हृदयान तो बट एक स्वार्थ सोडचें हें प्रत्येक स्तरारी तुमकां इट विल बी द डिमांड तुमी साधन करता वेन यू इंटरॅक्ट वेन यू लेट समबडी एल्स टेक क्रेडीट यू एनकरेज समबडी एल्स स्मॉल थिंग्स लायक दीस सो एक दिवचांतू एक परिश्कार यावो डोंट मेक इट एविडेंट सहजता याव तांतू हांची एक मुख्य आमी पळयत आसा ती कशी नवे नवे लोक येता ती युवा पिढी तयार जावन मुखार येवन करता enjoy that freedom you are getting and understanding deeper levels of seva because they are attending to the immediate practical exigencies. मस्तकले उल्लोंच ना हो खूब बरे बरे सगळे कार्यक्रम जाले नवरात्रींतू एक फंत कृपा वृष्टी जावं काज खंय आनी कशी पूज जाय सरी कले ना आमी वचोली कुडांत बसली आनी ती गरबा तयारी जाता आसा हगूर आवाजू कसले कले लीक जाता स्वाय टँक ओवरफ्लो जाना पावस खंय समज ओवर पावस यू हॅव टू चेंज द कंप्लीट वेन्यू बट पर्सनली आय वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज हांगची के एक्सपोज चड जाता आय एम नॉट व्हेरी हियर आंगणांत केलेले बरी समज गर्भ जालो ग्रँड जालें सहजता सगळ्यांत ती आमकां दिसून आयली एक्सप्रेस ती सहजता ह्या वो शक्ती म्हणच भितरी देर इज सो मच पुरुषार्थ मध्ये इज रेजिस्टन्स बाहेरी रेजिस्टन्स वी अंडरस्टँड वी हॅव टू डू समथिंग इंटरनल रेजिस्टन्स यू हॅव टू सेन्स बिकॉज इट इज इंटरनली दॅट यू हॅव टू डेवलप दॅट पॉयज शिव सायुज्म फॉर ऑल शिव इज दॅट स्टेट ऑफ पॉयज अदरवाइज इट विल बी थंड बसला क्या कर रहे हो शांत है करता नहीं निठल्ला अजीब बसला शांत है कि शांति बहते हैं दैट इज नॉट शिव दैट इज शव शक्ति नाचते हैं शक्ति बेटर यू स्टार्ट वर्किंग बट देन व्हाट इफ यू फॉरगेट द शिवा विद इन दैट्स नॉट डिजायरेबल सो तें एक बॅलन्स हाडचें शिवशक्तीचें सामरस्य आमकां जावंका भायर एक शक्ती प्रकटन वैभव ऐश्वर्य म्हण येद आनी खंय थान येता आसा भितरी भायर हो फरक वोर्न अंततोगत्वा तशें आशिल्ली ती अंतर्लक्ष्य आसका आनी थंय दॅट स्टेट ऑफ पॉयज आउट ऑफ इट समथींग टोटली न्यू कम्स आउट इट विल बी न्यू फॉर यू ऑल ईच इंडिविज्युअल ऑल्सो आमकां संस्कार मेळटा ती ट्रेनींग मेळटा अनएक्सपेक्टेड कले येवचे भितरी थंय पळोवंक कल जाता थंय इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू सम वॉट डू आय डू तशें म्हणून
सಣ್ಣ सಣ್ण विशयांतू तूं जातस की कल्ले म्हणलेलें आमी कमी उलोवच्या पळयत आसती सो तुमी जिकेची यू कॅन रिलेट टू इट एंड या मे बी लायक दॅट एक प्रोसिजर आसता तातूंत तुगेलें इफ देर सम कन्फ्युजन यू हॅव टू चॅक आउट विथ सम सिनियर बट अनएक्सपेक्टेड विंग अडकलें येता विथ पीपल एटसेट्रा यू हॅव टू लूक डीपर विदीन and there'll be a refinement because I'll be demanding. There will be a refinement. Your response to that unexpected situation will always go on improving. Otherwise, I'll find it difficult to interact with you all. So, अनेकतांतो परिष्कार येता तशी एक दृष्टिकोन दवरून करका सान एक विशय येयलो कोणेकलें म्हणल्यार म्हाका दुख्ख जातालें. I was very sensitive. The sensitive, I am sensitized to that word sensitive. Sensitive, you are touchy. And maybe your parents have also told everybody that their child is very sensitive. It's a misnomer. When you are sensitive to other people, that's sensitivity. Otherwise, you're just touchy. So, kal kurche, if you are not getting troubled, that is the first thing. Instead of getting rattled, na, chike sthir zal mana, vichar kurche, yogyata avarli. But then you may deal with that situation, a sudden comment or something nasty somebody says, kal zal ki dukh zal iska, any reason. How you move around it, maintaining peace outside. बडे स्वामीजीने एक प्रसंग सांगितला. आम्ही तिथलं वाचनी महाभारत. कर्ण आणि दुर्योधन. दुर्योधनाल बायल कुडांत आशिल्ली, दुसरे लोक आशिल्ले, कर्ण थंय आशिल्लो, जोक्स चलत आशिल्ली, मस्त. मागीर सडनली ती उठायली कलकी एक नाटकान अशें. त्या वेळार कर्णाने मणी पर्ल कटिबंध तशी घालून घेतिल्लें धरलें आनी शी फ्लिंच, शी जस्ट मूव्ड अवे, इट स्नॅप्ड. पर्ल्स पडली. दॅट इज वेन दुर्योधन केम इन. ही सॉ दॅट ओ पांय निसरतलो, कोणाकय लागतलें, आनी ही स्टार्टेड पिकिंग अप द पर्ल्स आनी कलेक्ट केलें. मस्त डिस्क्रायब करता म्हूण ना, इट कूड हॅव बीन कल्लें म्हणून ही डिफ्यूज द सिच्युएशन. Do you understand this? There was nothing wrong, but it could have been, Are, why this sort of familiarity? And Karna recognized that. That is when he embraced Duryodhana and he said, whatever you ask of me, I'll do. That's the prasanga. That is when Duryodhana, I believe, said, Arjun, tujmit matra jata kari. So learn to diffuse a situation also. Don't enjoy that. You yell, I'll yell louder. हे घरान जावच्या भाव आसा आश्रम. Your awareness of the place, spatial awareness म्हणटात न्ही, that is your main sadhana. खंय आसा, that will define how you should respond to him. Simply shh करून उपयोग ना. It's a very, very different thing. विचार करात, विमर्श करात. So अशी सळ आमकां अवकाश मेळटा ती, आनी these are the gems that I see. It's so beautiful. So all ages when they interact, हें सगळें possible आसा. Friction जावचें, and how you deal with it, how intelligently, you have to bring about a change in yourself and command the situation. That command is a word, please be careful. It doesn't mean you dominate. You don't let it get out of control at all. It's a difference, it's a kala. There are not just two individuals here. There's a tremendous Shakti which is gracious to me and gracious to this person also. I have no exclusive authority over it. So even as I change and I deal with the situation nicely, that same Shakti has equal love for the other person also. So I respect that other person.
as coming as provided by that divine Shakti to which I so want to belong and feel in its entirety, not just a fleeting emotion. Makes sense? Do that. I think these things are clear, isn't it? Instead of saying, I want to see God everywhere and all, I don't know what you are talking. व्यवहारांत पळयाती कितलो मोठा जाता डिफ्यूज करचें मागीर सांगचें दिस इज वॉट एंड इट्स ब्युटिफूल इट्स अ लर्निंग लव आनी आत्म एक बल अशी वाड्डू सूर जाता दॅट्स ऑल सो इवन द नीड टू एक्सप्लेन ऑन ऑल अनलेस इट्स रिक्वायर्ड इट फेड्स ऑफ वाय आय डिड दिस नो एक्चुअली इट वॉज नॉट लायक मस्त कमी जाता मेक सेन्स यू नो नावे स्थळे करपाची नथिंग when you have received a lot of love naturally you want to give back hausuvan asta kal deviyada we don't go on feeding each other our anxieties and worries that is the first thing तिका काळजी म्हण म्हाका काळजी म्हण तुका काळजी अशी जावन न्हू वी गो ऑन हायपिंग अप आवर काळजी म्हळ्यार दीस रिलेशनशीप इज नॉट कमिंग अप टू द इट्स ऑलमोस्ट अनहेल्दी सो मुखावेल मनशाक क्लोज पर्सन काळजी आसा म्हळ्यार आपणचे संयम दवरचो तशी कोर न्हू यू टू कम आउट तांतू परत एक उपासन आसता यद्यद विभूतिमत्सर्जम श्रीमद ऊर्जतमेव वा च म्हूण सांगल्या वॉट एवर वेर एवर यू सी सम एक्सलन्स जस्ट कनेक्टेड टू मी इट्स माय मॅनिफेस्टेशन म्हणून देव सांगता सो वी हॅव एक्सलन्स भोग आमट म्हणटा वा यू कॅन एप्रिशिएट डान्स केले कसले विलक्षण वॉट एवर समथींग वी कॅन But there is an excellence in very, very small interactions also. How a person has dealt with a particular hand. Learn to admire that. It will be yours. Recognize first that quality and then वाह म्हळ्यार दावाल नव्हतें तुज्यान तूं येतलो आपणान तूं येतलो तो गूण सो बी ग्रीडी फॉर दिस इट्स वेरी नायस आमी बुक्स वाचता ती हाव टू इम्प्रूव योर लायफ एंड ऑल लायफ इज देर read it, understand it correctly with some basic एक मार्गदर्शन मेळटा आदेशः उपदेशः अनुशासनम आदेश यानी ये करो बस बच्चे को बताया जाता है आदेश दिया जाता है उसको समझ नहीं रहती है छोटा एक आदेश है मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी लाओ इट्स एन आदेश यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट हाउ यू गोना एंटिसिपेट उपदेश विद एन एक्सप्लेनेशन बड़ा एक्सप्लेन कोण सांगचे अशी अशें अनुशासनम म्हळ्यार वस्तुतः उपदेशपूर्वक आदेशूची बट इट इज अ लास्टिंग थिंग यू विल हैव फॉरगॉटन बट इट इज सो डीपली इनग्रेन्ड दैट व्हेन द opportunity arises or in that particular situation you remember the adesha also and you are able to relate it to the present situation and to your present whatever age or status demands. Manthan Zavnu, how you behave will be the Anushasanam. That is what we call Anusaranam. Anusaranam Zamchasu Zata. You don't have to, what was I told, what to do? Tanzania. Then it is there deep within and you know this is what is expected of me by my Guru. What a joy it is, And you don't require any other approbation from anybody. That poise that you experience, that joy, that is enough. But don't wallow in that also. Move ahead, fastly. Vastit lekaka rati, these are the main opportunities that we all get. Ashi eka very intelligent gathering antu. Assa nav intelligence assa nave. Assa demand kelya swamyani nazalyar upyog na. You just can't connect only. And that intelligence is there. We have tasted, we have sensed the closeness of the divinity and we want it to manifest in our life. That is intelligence.
मगलें हांव म्हणणे हांव आसता, बट अनफॉर्च्युनेटली हांव कशें तुगेलें की दुसरे तुगेलीची कर्म. सो हाव डू आय डील विथ इट? तशी एक प्रौढता येवन कार्य करूंक मार्गदर्शन मेळटा. टेकून करया, खुशीन करया. आतां भजन करया. खंय आसलें? शिव चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी. चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी. चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी. जयति श्रीवल्लीचिदाभा. जयति श्रीवल्लीचिदाभा. जयति श्रीभुवनेश्वरी. जयति श्रीभुवनेश्वरी. चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी. विश्वबीजा विश्वधात्री. विश्वबीजा विश्वधात्री. विश्वप्रलयकारिणी. विश्वचक्रेशी विमोचनी. जयति श्रीभुवनेश्वरी. चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी. चक्रनिलया वर्णजननी.
रक्षिता सूक्तस्तुत्या मौनवेद्या सूक्तस्तुत्या मौनवेद्या जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता सुषुम्ना पथगामिनी मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता सुषुम्ना पथगामिनी शिवयोगेश्वरी सुधास्यन्दिनी शिवयोगेश्वरी सुधास्यन्दिनी जयति श्रीभुवनेश्वरी जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी जयति श्रीवल्लीचिदाभा जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी मा जननी कार्यक्रमाचे आयोजन करूक मस्त पुरुषार्थ केल्या आणि युवधाराने एक महिने पयलीं दोनूच सगळें फूल पार्टिसिपेशन आशिल्लें एक काउंटरार येवन बसचें आनी तातूंत मात्र न्हय अंडरस्टँड द डायनामिक्स सर्विंग शिकता आसतना ओके तयार कितले घंट्यार जाता वेजिटेबल्स कशी येता ती खंय थान येता ती माहिती हगूर घेया ती अजय मामाल्याग्यांनी सांगिल्लें सो हगूर हगूर अंडरस्टँड हाऊ दी एंटायर मठ फंक्शन्स नॉट आय नो ओनली दीस मच म्हूण सो तांणी केल्लें आनी
सुमार लोक 5 दिवस 10 दिवस राबल्यात हांगा. ताचे पयलें जॉब्स खंय हांवें खंय खंय कॉन्फरन्सिसान चलता आसा ती आनी येवन कंप्लीट डेडिकेशनान केलें. हें पूण एक हाज्यान पूण प्रेरणा प्राप्त जावं कपल्ड विथ वॉट गिरीश माम जस्ट मेन्शन्ड. आतां सगळें आशिल्ली मे ती इक्विपमेंट घार बसूनच आमकां लागीं पळयलें बरी दिसता म्हण जाल्यार ओके, बट ऑन गुड ओकेशन्स जिके येया ती. आय डोंट हॅव टू बी हियर. लाभ घेयात ताजे. स्थान आर्यवन घेवचें विंगडच आसता. इतलेक इज कोर न्हू खंय जातलें. गुरुसाहेब खंय जातली. एक तितलें सामर्थ्यच वरस ना. सगळें इन द कम्फर्ट ऑफ युअर रूम ऑर बेडरूम मेळ्ळें म्हण जाल्यार जावचेंच न्हय. थोडे पुरुशार्थ करा ती. प्रेरित जावन करा ती. मस्त लाभ जातलो. तावे आमी सांगता ती ताची मस्त गरज आसा. शारिरीक कले हें आसा इत्यादी आमच्या जायना विंगड खबरी. आलशेपणां ती ह्या नातेल राबल्यार यू आर रियली लुजींग आउट ऑन अ लॉट. अर्थान तूं आय डोंट नो. आय स्टील हॅव अ year on almost a month to go, okay? 60 का हां. बट एज इट नियर्स करा ती म्हण चिके म्हण अधिकार चड येता आनी तांत एक सहजताय येता. नावे नोबडी इज आर्टिफिशियल. मुख्य यजमान जावन आशिल्लो उपोणी मामू, तशीच आमगेले प्रेसिडेंट मामू, वायस प्रेसिडेंट मामू, सगळे सिनियर्स जाल्यार चेडणा न्हाण येना फुडचे पडोर बडोर लावन ते बांदून पेटयतात पळय तशी जावन बसली. रिसीव करो काय तवळी एवरीबडी इज अ बच्चू ओनली. देवी मुखारी वय की ना. तवळ दिसच येता न्ही. जबाबदारी आयल्यार यू का बिकॉज यू कॅन डॅमेज. यू आर रिस्पॉन्सिबल. सहज येता तें एक बालवद आचरेत म्हणून आसा. ज्ञानाची पराकाष्ठा स्थितप्रज्ञस्य का भाषान म्हूण सांगना पूण कितली वर्णन केल्या. बाहेरचें वर्णन करनी तो अशें बसता अशें हांवें करता आनी करनी. आंतरीक स्थिती कसली तें वर्णन केलें. आनी एक सहज इन अ नटशेल म्हळ्यार बालवद आचर. नॉट चायल्डिश, चायल्ड लायक. सहजता येता. मी म्हणलें इज नॉट सो इम्पॉर्टंट. मिथ्या म्हूण कळ्ळ्या इज नॉट गोइन टू प्रोजेक्ट ऑर प्रोटेक्ट. सो एक सहजता येता. सो प्रकटतया एक सहजता आयली आमकां खुशी जाता आसा. बट तें पॉयज येवंका. रिमेंबर दॅट कार्य जावंका तें भायर प्रकट जाता. आंतरीक विद्वेश आसता तें शांत जावंका. बट नॉट स्टायफल्ड ऑर पॉयज ग्रँड कोन्न जाता. इतलें एक लक्ष दवरल्यार गमटे कोन्न कोरया, खुशीन कोरया. Each one of us is entitled. Nobody is more entitled. So तितले खुशेन केल्यार कोणाल मार कौतुक जातलें. गुरूंगेल कौतुक जाता. गुरू शक्तील कौतुक जाता. वस्तुतः तशें जावचें आसूं जाता. आनी तुमकां कल मेळटा म्हाका कल मेळटलें. सर्वत्र व्याप्त जावन अशी गुरू शक्ती म्हूण तें म्हाका बोध जाता. दॅट इज आवर गोल. प्रत्यक्ष. ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Mahadev. Anything else? Have I missed out on anything? Kale sang cheshilva? Anyone? Aditya? Kale ashilva? Wonderful work. You should share your experiences, okay? Javna velari ani with the seniors, Kornailanti. And with people who have not yet had the occasion or the privilege of doing seva, sustained seva, share it with them. It will be nice. What you learned, what you enjoyed. I like this, yes. But what I learned to like, even better. Moggan was the word. Sujata Pachil, I shall I would have remembered.
यू वॉन्ट टू बी मोगण भाई गुरू मुखा नावे हांव पळयतलो बुद्धवंत आसा सो यू आर प्रिविलेज टू हॅव मी एज शिष्य म्हणून. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.